Hello everyone, welcome to PTE Reading Filling the Blanks Real Exam Question Series, and this is 33rd video in this series. It means that we have already discussed 32 highly repetitive and occurring real exam questions, and हमने साथ के साथ इनकी tips and tricks भी सीखी हैं how we can solve them. So let's get started. First things first, PTE is now accepted for UK, so you can study, work or settle in UK with PTE. And 90% of Canadian universities now accept PTE Academic, and a new test, which is PTE Home, is started, which is acceptable for spouse visa in UK. And my name is Bhrat Brij, and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills. And in this series, we discuss the reading hacks, useful tips and strategies so that you can achieve your target score in first attempt, because there is no point आप पेपर के ऊपर मनी बार बार वेस्ट करें, and you have to learn, you have to understand how PT can be cracked, and then only you should go for your paper. So that's why do not forget to subscribe to our channel, because we post such informative videos on a regular basis. Now PT reading integrated section timer होता है 32 to 41 minutes का. It has 5 question types and it is not scored out of 90. जो score है वो 47 है रहता है PT reading module का. We are going to see the detailed scoring in a jiffy. And over here, and PT reading blanks are second last question types, and you have to manage your time yourself. So this is the real PT reading scoring. If you see, the PT reading is of 47 marks, and usme se reading filling the blanks, the topic of today's video, is of 15 marks. So if you are getting 5 RFIBs, so they will be of 3 marks each. Okay, that being said, you have to manage the time. So you have 2 to 2.5 minutes only. With our big data analysis, we could find out that you have to spend a max of 2.5 minutes of solving your reading filling the blank. And उसमें क्या आप सारे words पढ़ सकते हो. This is the number one mistake which often people commit or students do, कि वो सारे words पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. The answer is no. What you have to do is you have to do skimming, and skimming can help you to get to your target score. And we teach it in detail to our online as well as in-institute students. So this is today's topic, and as usual, I'm going to give you 30 seconds to go through this. Okay, I'm back. So now we do the skimming. सबसे पहले हम skimming करते हैं to understand the gist, कि किस चीज़ के बारे में है. We understand its gist, and then after that we see for its tenses, कौन से tenses use हो रहे हैं, past tense use हो रहा है, present या future tense, and after that we will look for its tone. Positive tone है, negative tone है, neutral tone है या academic tone है. So let's get started with its skimming. Sociology. अब इसकी pronunciation is sociology. Okay, sociology नहीं होता जो हम generally pronounce करते हैं. It's sociology. Okay, sociology in its very basic terms, the study of human societies. In this respect, it is usually something as one of social sciences along with something like psychology, and was something as a something in late 18th century. Okay, अब जो ये कंटेंट है आपका ब्रैकेट में, you can ignore it because that is always optional. However, the subject has only gained something as an academic subject in the 20th century through the work of writers. अब writers के name हैं जो आप ignore कर सकते हो. One name that you may heard of, Karl Marx, the founder of modern communism, had probably done more to stimulate people's interest in the subject than anyone else. Even something he lived and wrote in a period before sociology became fully established as an academic discipline.
Sociology, therefore, has a reasonably long history of development. Something in Britain, it has been last 30-40 years that sociology as an examining subject in education system has achieved a level of importance as most of other subjects. It is impossible to study. ओके सो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट की विच इज सोशियोलॉजी. ओके हम उसकी बात कर रहे हैं, वो एज अ सब्जेक्ट है, पहले नहीं पॉपुलर था. सो कार्ल मार्क्स ने काफ़ी वर्क किया है उसके ऊपर और अब रिसेंटली ब्रिटेन में या फिर हर जगह उसको एज अ सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस मिल रही है. सो लेट्स सी द planks. Okay, so let's get started with the first plank. Sociology in its very basic terms, the study of human societies. ठीक है, आपको बताई हुई है. In this respect, it is usually something as one of social sciences. अब सोशल साइंसेस का सोशियोलॉजी क्या होगा, एक पार्ट है. और हम बार बार यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, थ्रू फॉरवर्ड रीडिंग वी हैव सीन दैट हम बार बार यहाँ पे सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं. सो लेट्स सी the answer for this one. Now we are going to use process of elimination. In process of elimination, which I say it's your best friend forever, we eliminate the wrong options and we keep the right options. So leftover, it is usually leftover as छोड़ देते हैं उसको, no. Stated as, yes, it can be said that it is usually stated as one of the social sciences. Stated का mean क्या होता है, clearly expressed or identified or specified as. It is usually identified as or specified as one of the social sciences. Let's see, let's keep it for now. Okay, stated subjects, yes, makes sense. It is usually subjects as one of the social sciences. Doesn't make sense, right? Although and though आपको पता है आपके signposting words हैं, so we are not using signposting words here. Like it is usually although या it is usually though doesn't make sense. Suspect क्या होता है जब आप किसी चीज पे डाउट करते हो, इट इज यूजुअली सस्पेक्ट, नो. इट इज यूजुअली सब्जेक्ट, द आंसर इज नो. इट इज यूजुअली समथिंग एज established as, yes you may say that. Classed as, yes you may say that. It is usually classed as. Acceptance नहीं होगा, accepted होता. तो यहाँ पे आंसर आपका होता अब दो. ऑब्वियसली दो नहीं हो सकता. अब यहाँ पे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल स्टार्ट होता है, राइट? अब आपको पता है एलवाइज में क्या जनरली एंड होते हैं, आपके एडवर्ब्स एंड होते हैं और एडवर्ब्स के बाद क्या आते हैं, वर्ब्स. तो अब हमने कौन से ऑप्शंस रखे थे, स्टेटेड, क्लास्ड और एस्टैब्लिश्ड. ओके, एंड सी ऑल ऑफ दोज आर योर verbs. Okay, so we can eliminate all other options quickly अगर वो हमारे verbs नहीं हैं. This is something which you need to learn also. So यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं one of classed as. Classed का मीनिंग क्या होता है, जब हम असाइन करते हैं या एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कोई चीज बिलोंग करती है. अब stated as one of the social sciences नहीं, सेंस नहीं बनती है. ओके, बिकॉज यहाँ पे ये वर्ड कंप्लीट नहीं है. ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट्स होता तो मैं कह सकता था, बट सोशल साइंसेज आपस में ही एक कैटेगरी है, राइट? कि बहुत सारी सोशल साइंसेज हैं जिसमें से आपकी एक सोशियोलॉजी है, राइट? दूसरी साइकोलॉजी है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे. सो स्टेट नहीं हो सकता. ओके, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस. एस्टैब्लिश भी नहीं होगा. एंड दिस इज द आंसर. क्लास, क्लास का मतलब क्या, ग्रुपिंग करना. आप एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हो. यस, सोशल साइंसेज इज योर ग्रुप एंड इट इज यूजुअली क्लास्ड एज वन ऑफ द सोशल साइंसेज. ओके, अब मुझे बताइए, अलॉन्ग विद समथिंग लाइक साइकोलॉजी. अब हमने फॉरवर्ड रीडिंग, इसमें इंपॉर्टेंस है फॉरवर्ड रीडिंग. रिमेंबर सोशियोलॉजी क्या है हमारी, सोशियोलॉजी हमारी एज अ सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं, और साइकोलॉजी भी क्या है, एज अ हमारा सब्जेक्ट है. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द सब्जेक्ट यूज हो रहा है. अब द सब्जेक्ट यूज हो रहा है मतलब सब्जेक्ट ऑलरेडी डिफाइन हो चुका होगा, पार्ट ऑफ आवर ग्रामर रूल्स. सो जिसके कारण अब यहाँ पे द यूज हो रहा है, तो अभी तक हमने यहाँ पे कहीं पे भी सब्जेक्ट वर्ड यूज नहीं किया है. ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या सेंस बनाएगा, अलॉन्ग विद सब्जेक्ट लाइक साइकोलॉजी. अब सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स. अब अलॉन्ग विद के साथ यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा.
क्योंकि हम ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दे चुके हैं सोशियोलॉजी का, सेकंड है साइकोलॉजी जो कि सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं. So that's why we are going to use plural over here and the answer will be subjects like. Okay, so that's why we are going to use subjects because we found it through forward reading that we are talking about subjects over here. And was something as a something in the late 18th century. Okay, अब क्या हुआ was, this is quite a tricky one. अब आपको आंसर्स प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू आपको दोनों ब्लैंक्स इकट्ठे फिल करके देखने हैं सेंस बनाते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. सो अब आपको पता है आप सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो. एंड वॉज समथिंग एज अ समथिंग. अब हम क्या कहते हैं यहाँ पे वॉज है, राइट. वॉज क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है. वॉज के साथ हम क्या लगाते हैं, या तो हमारी पैसिव वॉइस यूज हो रही होती है या फिर हम वॉज के साथ पास्ट टेंस यूज करते हैं वर्ब की ईडी फॉर्म. Again, part of our grammar, right? You need to understand parts of speech and we have 3-4 lectures in detail on parts of speech. So यहाँ पे अब ed forms या फिर ing forms, right? यही दो forms use करते हैं, was eating, was eaten, something like this, right? So अब आपके पास कौन सी ed's या ing forms हैं, बाकी सब आप process of elimination से eliminate कर दोगे. See how easy it gets if you know the basics, right? So यहाँ पे stated और established. अब it was stated मतलब explain किया गया था, नहीं, right? It was established as a subject because again forward reading से हमने बात की it has only gained something as an academic subject in the 20th century. So अब आप मुझे बताइए 18th century में वो क्या होगा कि 20th सेंचुरी तक उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली. स्टेट होगा, एक्सप्लेन किया होगा कि सोशियोलॉजी क्या है, द आंसर इज नो. स्टैब्लिश किया होगा, एस्टैब्लिश का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, मोर और लेस की एक्सेप्ट किया होगा एज अ सब्जेक्ट. जब आप किसी चीज को एस्टैब्लिश करते हैं मतलब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई वाज accepted or established as. Okay, so we have selected established. अब वो as क्या हुआ है, remember forward reading, यहाँ पे the आ रहा है subject, यहाँ पे subjects हैं पर अभी तक हमारा subject word mention नहीं हुआ है. the लगा हुआ है मतलब subject already define हो चुका है. so यहाँ पे answer क्या होगा, subject, right? It was established as a subject in the 18th century, right? So that's why we have selected this one. However, the subject has only gained something as an academic subject in the 20th century. अब क्या gain होती है, collocations की knowledge, right? अब आप इसमें से देखिए क्या gain होती है. हम क्या कहते हैं generally popularity. We gain popularity, okay? अब इसमें popularity वाला word, similar word कौन सा है, लेफ्ट ओवर नहीं है, स्टेटेड नहीं है. सो ऑल्दो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, थ्रू भी एलिमिनेट कर सकते हो, राइट? गेन सस्पेक्ट वैसे ही नहीं हो सकता, सस्पेक्ट नेगेटिव वर्ड है, गेन पॉजिटिव वर्ड है, कॉनोटेशन या टोन मैच नहीं करेगी. अब दो भी नहीं हो सकता. ओनली आंसर थ्रू आवर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज गेन्ड एक्सेप्टेंस. सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द आंसर एज गेन्ड एक्सेप्टेंस. ओके, so we have selected this. Let's move on to the next blank. One name that you may heard of, Karl Marx, had probably done more to simulate people interest in the subject than anyone else. Even something he lived and wrote. अब even के साथ अगर आपने हमारे sign posting words का लेक्चर अटेंड किया हुआ है, even के साथ क्या यूज होगा, दो, राइट? ना थ्रू यूज होगा ना ऑल्दो यूज होगा, बाकी तो ऑब्वियसली यूज नहीं होंगे. दिस इज अ साइन पोस्टिंग वर्ड, so the answer is going to be even though, right? So we have to select it. Now over here let's see. Sociology therefore had a reasonably long history of development, कि 150 to 200 years की उसकी development होती रही. Something in Britain, it has only been in the last 30 to 40 years that sociology has, as an examining subject in the education system, has achieved a level of importance. अब यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि 150 से 200 साल तक वो डेवलप होता रहा, पर देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पर लास्ट 30 से 40 साल, कंट्रास्ट की बात की कर रहे हो, पर लास्ट के 30 से 40 साल ही उसकी पॉपुलैरिटी एक्सेप्ट हुई है कि वो एज अ सब्जेक्ट एक्सेप्ट हुआ है.
तो यहाँ पे पर मीन्स कंट्रास्ट किस तरह से यूज हो सकता है? इट कैन बी ऑल्दो और दैट्स इट, राइट? वी डू नॉट हैव एनी अदर वर्ड लेफ्ट, तो यहाँ पे ऑल्दो यूज होगा। एंड अगर आपने हमारे साइन पोस्टिंग वर्ड्स के ग्रामर के लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, यू नो दैट ऑल्दो से पहले कॉमा या ऑल्दो के बाद कॉमा नहीं आता है। So that's why the answer for this one is going to be although. Now let's see if all the answers are correct. Yes, all the answers are correct. So what are our strategies to solve reading filling the blanks? Our strategies are based on the context, lexical resource and grammar. In context, skimming is important. Then after that you had seen we had solved one blank on the basis of forward reading जहाँ पे subject की बात हो रही थी. Backward reading is also important and tone matching is important. You had seen कि हमने वहाँ पे suspect नहीं choose किया था क्योंकि उसकी tone या connotation negative थी. And collocations important हैं. Along with collocation, phrasal verbs are important and vocabulary is something which we keep building with time. जैसे यहाँ पे आज मैंने आपकी pronunciations improve की. We keep explaining the meanings of difficult words, so your vocab also improves. And in grammar, we have a complete grammar course where we teach parts of speech, subject verb agreement. आज आपने parts of speech से देखा, हमने अपने आंसर सॉल्व किए. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमें पता चला सब्जेक्ट्स यूज होगा, सब्जेक्ट नहीं यूज होगा, प्रपोजिशंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स. साइन पोस्टिंग वर्ड्स के बेसिस पे हमने 2 ब्लैंक्स सॉल्व किए. टेंसेस, इरेगुलर वर्ब्स, ब्रिटिश इंग्लिश रूल्स एंड सेंटेंसेस. And grammar, and this course is very important if you are looking to achieve 79 plus or 65 plus in your PTE scores. And remember, you have 2 to 2.5 minutes to attempt your reading filling the blank. In first 30 to 60 seconds, you have to skim the content, and in the next 90 to 120 seconds, you have to use process of elimination, or you can also use our grammar tips so that you can solve your reading blanks. And always remember, Marvel PTE strategies which we teach are validated and proven strategies. The proof is in the ticker below. You can see the scores of our students, and these are some of our recent success stories where students have scored even a perfect 90 overall as well as in each module. And if they can score, you can also score. Or you want to take online or in-institute coaching, you can contact us at 8699 121 121. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.